Anshul, tell me how much score did you get in last championship test? 140, sir. 140. And what about Quant, LRDI, and VRC? VRC, I think I got around 60, 65. In DILR, I got around 40, 45, and in Quant also I got around 45. Okay. So it means your VARC good and you are lacking in Quant and LRDI, right? No, sir. Actually, my Quant is good, but I am able to score in VRC. In VRC, I am not studying that much. That also I am getting a score. Okay. And how many questions did you attended in Quant? Sir, that was only the problem. Means I knew more 8 questions, but I could not attempt them. I actually attempted around 20 questions. 20 questions. And how many questions are correct? Around 16 or 17 I got correct. Okay, 16, 17, 20 means 4 wrong. Yeah, around 3, 4 wrong. 3, 4 wrong. So in what part you are facing problem? Means my geometry is weak for Quant. Okay, and what about mensuration and algebra? Yeah, rest others algebra mensuration are good. My main weakness is geometry. See, Anshul, in geometry, you can expect 2 to 3 questions, and these 2 or 3 questions are very easy. So, did you join any coaching or did you take any subscription plan in an academy or not? No, sir. No, sir. And any coaching? No, sir. No coaching. How do you prepare for your CAT? How do you prepare for CAT? Actually, I have completed Arun Sharma book once, but in that also my geometry was not very good. Means rest sections were good, like modern maths and algebra arithmetic, but that was not good. So See, Anshul, if we can leave geometry question, still you need to solve at least 20 to 24 questions, right, to get yes, up sir. to 99 percentile, right? Yes, sir. Means for 99 percentile, you must solve at least 22 or 24 questions with 90% accuracy, right? Yes, sir. So Yes, if you consider only geometry is a weak portion, but still you have 30 questions remaining, 30 or 31 questions that you must solve. yeah. Right. Yes, So sir. what is the problem? Means why you are not able to solve 10 more questions? It is Because I was not able to see 10 questions. Means the timer was up and I was on 21st or 22nd question or 23rd question. Means in last 10 questions, I could only attempt 2 or 3 questions. it means you took some more time in a particular questions. Yes, sir. And Means each in 2 question, questions, I have taken more than 300 seconds. Means it was of time and work, but I knew that I would get the answer. So because of I wanted that, I wanted to get the yeah, answer. this is the problem of each and every good student. If you're good in quant, you must say that you can solve it and you give your complete time for that particular question. Last time when I discussed this same issue with one of my student, he has same issue. He gave around 5 to 6 minutes for a particular time speed distance question. And believe me, for every student, they think that they can solve arithmetic questions like time and work and time speed. They devote more and more time on these questions. And if these questions are dicey, then it create problem. So do one thing for every question, give maximum time limit, right? If you are not able to solve that question in that particular time limit, then leave it. Maybe possible if you do like this, you can solve much more question, right? Yes. For example, you gave 5 minutes for a time and work question, right? Yes, sir. And if you mark it for 3 minutes, I will not solve this question after 3 minutes. So maybe possible in next 2 minutes you can solve 3 or more 4 questions, right? Yes, So this is simply a ego problem or overconfident problem of a good mathematics student. ये मुझे भी प्रॉब्लम होती थी जब मैं भी पढ़ाई करता था. When I gave CAT or other examination, तो हमें लगता था कि धीरे-धीरे हमें लगता है कि यार if we have a foundation of 3 minutes for each and every question, means if you are able to solve a question within 1 minute, then it is okay. But never go beyond 3 minutes for a particular question. Okay. क्योंकि होता है कि when you are solving a question in examination hall and maybe possibly you are doing same error again and again, right? Yes, sir. Possibly you are doing same error again and again and you are not able to point out where you are making mistake, right? Yes. This is the one advice: do not go more than 3 minutes for each any question,
right? Okay. Okay. What about your LRDI? So LRDI means the sets which I knew, means I got 4 wrong, means I solved complete sets, means a few sets I didn't touch at all, and the sets I solved, I in total I attempted 5 sets. Okay. And when you solve this quant portion, so what is the level of that particular test? Means how do you like this level of our championship test? I feel it was easy because I solved the questions later, so I was able to solve more 8 questions. So See, around I was able to solve 25, 26 questions. actually, problem is this: paper are always easy, right? It is the time that matters. Means 60 minutes solving these 34 questions is not easy. If you're Yes. sitting at your home and with a normal condition, you can, I think you can solve these 34 questions within 60 or 70 minutes. But that pressure, that clock is ticking, then this is the issue. Yes, sir. है ना 34 क्वेश्चन पेपर को मैं फाइनल सेट करता हूँ, फाइनल चेक करता हूँ. आई थिंक दिस इज अ मॉडरेट पेपर. It contain around 16 to 17 easy question, 10 to 12 moderate, and 5 to 6 question difficult, right? It is very important you must search those questions which are easy. So if you go with let's say, अच्छा आपका process क्या होता है? You start solving question from question 1 itself, or you search for the easy question? आपका प्रोसेस क्या होता है एग्जाम में जब आप पेपर स्टार्ट But करते I start solving with the first question only. हैं? ओके, सो डू वन थिंग फॉर नेक्स्ट. अच्छा, इसके अलावा आप और कहाँ से मॉक टेस्ट दे रहे हो? सर इसके अलावा करियर लॉन्चर और IMS का भी लेने वाला हूँ पैकेज. Okay, so start like for next 2 or 3 mocks, do one thing. First of all, solve question on merit, right? Do not start with question 1, right? And then check whether you are able to solve more question with this strategy or your previous strategy is working good, right? Okay. There is 2 type of strategy. One is start from first question, then go 2, 3, 4 and so on, right? And second strategy, see the first question. Within 30 seconds you will get instinct that whether you are able to solve it or not, right? Yes. आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे, most probably कैट के क्वेश्चन में takes hardly 20 to 30 seconds to read a particular question, right? उसी वक्त आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि whether you can solve it or not, right? If your mind says that yes you can solve it, then start solving it. Yes, sir. 1 or 1.5 minutes solve it. Go to next question. If once you read it you say that you are not able to solve it, then skip it, go to the next question. एक प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये होती है कि इफ यू आर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर अर्थमेटिक क्वेश्चन, तो हर स्टूडेंट लगता है यार अर्थमेटिक तो मुझसे हो जाएगा, राइट? कि प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन लिखा यार ये तो मुझसे हो ही जाना है, राइट? ये आपको छोड़ना पड़ेगा. आप पहले कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ यू सी अ क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, solve it for next 1.5 minute. If not, then leave it, right? Okay. ये इशू होता है स्टूडेंट. मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व. इवन मैंने जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम लिए, कोई भी स्टूडेंट, और सब अच्छे स्टूडेंट है मैथ्स के, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 20 क्वेश्चन. एंड पेपर आर इजी, ऑल द पेपर्स आर इजी. फर्स्ट पेपर इज वेरी डिफिकल्ट. डिड यू अटेम्प्टेड दैट फर्स्ट पेपर Of championship? फर्स्ट पेपर? Yes, championship test first paper I attempted. That is difficult paper if we compare with this second and third. Yes, sir. How many question you got correct on that first paper? In quant I got around 32. Correct. Yes, Your marks are 32. Means Yes. I think you have attempted 15 to 14 question, right? Yes, around that range. And in second mock, second championship test, Second mock I got in quant 45. 45, and this you are getting 40. 45, yeah, around 40, 40, 45. 45 means you are up to this mark. And what are your percentile in that particular paper? Overall. In this test it was 99 point something. In last test it was 98 point something, and in the first test it was 94. 94 means you can get easily, because the paper of CAT is somewhere below than this paper. The questions in CAT are easy, right? As you all know, जो हम लोग पेपर बनाते हैं या CL हो गया, IMS, ये सब हम लोग पेपर का लेवल बहुत हाई रखते हैं, right? One paper should be high, then second would be easy, then high, then easy. This is the pattern.
but you must go to beyond 25 question mark, right? Because your first paper 32, then 45, then 45, it means you are solving just 20 questions. So for next exam, next championship test, which is scheduled on Saturday, try to go with question on merit, right? Let us check how many questions you can attempt with this strategy, right? Because your score is 20 out, you are solving just 20 questions, means you are skipping these remaining 14 questions, right? So merit पे question solve करना है आपको अगले test में, Yes, sir. है ना? Because as you Okay, said, sir. you Yes, after sir. the exam you think that you can solve at least 10 more question, 8 more question, है ना? आपके एग्जाम के बाद आपको लगा था Yes, sir. 8 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते थे, and solving हाँ, 1 or 2 more question will increase your percentile. It will increase your percentile from 99 to 100 as well. yes, Means for 100% you need to solve at least 25 correct question. yes, sir. 75 score is there for 100 percentile, and after that 60 to 75 is between 98 to 100. It depends कि पेपर कैसा बना है. अब अगर हम कैट के पेपर की बात करते हैं, 2018 is more difficult than 2019. Yes, sir. 2018 में 70 score is equivalent to 100 percentile, and 2019 75 score is equivalent to 100 percentile. If, Yes, sir. if you want to get this 70 and 75, right, 70 and 75 score, let's say for 2020 it may be 72 or 70, it is between 72 to 75, because this year IIM Indore is conducting this paper. So maybe possible algebra and geometry and mensuration would be tough. And if you want to prepare your geometry, you can do one thing. I have my one course on Unacademy, free course, that is Plinth to Paramount geometry, right? Okay, sir. You can watch that particular course. It is around 18 hours course. It include everything from very basic to advanced level, right? Okay. So you can prepare your geometry from that particular video. Free video है, मेरे course में जाना, मुझे follow करना, उसके अंदर आपको दिख जाएगा, right? Okay, sir. Yes, sir. I think geometry करो, वहां से आपको help होगी. और previous geometry questions को, मेरा previous geometry course भी है, तो वो भी आपको helpful होगा, right? Yes. Yes. Any other query आपकी? Okay. Means in LRDI sometimes the paper comes out to be tough. So It is paper is tough. Maybe possible you have not solved these type of set previously. अगर आप ऐसे टेस्ट पहले आपने ऐसे सेट पहले सॉल्व किए होंगे तो आपको आसान लगेगा. तो it is you have to solve at least 1 or 2 set daily. okay, sir. आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो LRDI की? Sir, 3 days LRDI, 3 days quant. Means And how many hours you devote for study in every day? sir, Are you working or not? Are you working or non-working? sir, अभी 4 months की इंटर्नशिप थी और अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो मतलब वो कुछ टाइम तो मेरे को उसके अलावा Online जाता है. college you have to give online. Yes, sir. Okay. So how many time do you have for your study? Means daily, if you ask for a minimum limit, I study for at least 2 to 3 hours. Okay. So, why do you give 3 days for LRDI, 3 days for quant? Can you do like this daily 2 hours quant and 1 hour LRDI? Because daily 1 hour LRDI means you have to solve at least 2 set, right? Yes, sir. Solve Yes, at least 2 set daily, and try to solve different set possible, right? At Unacademy we have different mock test, right? Do one thing, solve sectional test of LRDI every day, or in 2 days solve one set, one paper of 34 questions. Okay, sir. For example, if let's say you start with a sectional test of LRDI, free LRDI tests are also available. You can give those tests, and then try to make 17 or 18 questions in a day. Okay, sir. LRDI. Give 1 hour daily, because you can score more if you practice more, right? LRDI में आपका 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं 14 क्वेश्चन का और प्रॉब्लम है, राइट? Yes, तो sir. 3 days क्वांट, 3 days LRDI को स्किप करके आप per day quant and per day LRDI करो. Maybe you can solve for half an hour or 1 hour for LRDI and 2 hours for quant. Yes, sir. And I think आपके quant के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, बस ज्योमेट्री छोड़ के.
हाँ मतलब ज्योमेट्री में अभी प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं उसमें। तो आप मेरा मॉक पहले कोर्स देखो, आपको हेल्प होगा, सर्टनली हेल्प होगा उस कोर्स से। ठीक बहुत है। कुछ होता है ज्योमेट्री में एक्चुअली। ज्योमेट्री इज द इजीएस्ट चैप्टर इफ यू नो ऑल द थ्योरम्स, राइट? सी, ओके सर। आर यू ग्रेजुएट और इंजीनियर? सर आई मींस आई विल बी कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग दिस ईयर। ओके, विच ब्रांच? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। अच्छा, हमने जो इंजीनियरिंग किया था सिविल इंजीनियरिंग से किया था। सो एक पॉइंट होता है, जैसे अर्थमेटिक होता है ना, इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग यू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू गेट योर आंसर, राइट? अर्थमेटिक में जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी गो फॉर टाइम एंड वर्क, वी हैव लिमिटेड कॉन्सेप्ट, right? 4 to 5 concept, and then different questions are possible. But in case of geometry we have around 70 to 80 concept, right? यस The सर। point is, अगर आपको सही कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप सही क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। प्रॉफिट लॉस या अर्थमेटिक हो गया, आपको करना पड़ता है ना? जैसे एलिगेशन हो गया कि वी हैव अ कंटेनर इन विच वी हैव मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो, वी टुक सम पार्ट एंड देन मिक्स विद वाटर एंड सो ऑन। सो आप करना स्टार्ट करते हो, मे बी पॉसिबल देयर आर चांसेस ऑफ 80 to 90% यू विल सॉल्व इट। ज्योमेट्री ऐसा नहीं है, आपको पता ही नहीं कहां से स्टार्ट करना है। तो ज्योमेट्री है आपकी थ्योरम्स और ये सब ढंग से प्रिपेयर हो। जैसे हम लोग जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमारे जो ग्रुप में थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर थे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। तो हम लोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सिविल इंजीनियर अगर साइड पे ना भी जाए तो काम हो जाएगा, है ना? सिविल इंजीनियर लाइक अर्थमेटिक कि काम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ करो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा। बट ज्योमेट्री लाइक ए कंप्यूटर साइंस, अगर आपने कोडिंग किया, गलत कोडिंग हो गई, एक वर्ड गलत हो गया, पूरा आपका सॉफ्टवेयर बेकार है ना, सिस्टम नहीं करेगा आपका। उसी तरह से आपका जो ज्योमेट्री होता है ऐसा ही, आप ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, हो जाएगा, राइट? मेरी फ्री वीडियोस देखो, ठीक है? और अगर आप फिर टॉप करोगे, फिर मुझसे मेंटरशिप प्रोग्राम में आओगे तो बताऊंगा तुम्हें। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैसेज कर सकते हो। ओके सर। तो मैं आपके वहाँ भी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो सर आपको वो आपकी वो 250 क्वेश्चंस वाली, मैं अभी वो रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, मतलब मैं लाइव अभी कवर नहीं हुआ है, नहीं तो मैं लाइव भी आ सकता था। हाँ, तो मजा आता है उसको देख के। हाँ सर, क्वेश्चन अच्छे हैं उसमें। अभी और भी मेरी भी 27 और 28 29 सीरीज भी है, अभी और भी मैं इसमें इंक्रीज करूंगा। एंड आई गो विद सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर सीरीज ऑफ 250 क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक 30 पर ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? 20 इस मंथ में फिर नेक्स्ट मंथ से मैं नया सीरीज स्टार्ट करूंगा 250 या 100 क्वेश्चंस की, और एडवांस लेवल क्वेश्चंस। यू वांट सम मी टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चंस लेवल आर गुड? क्वेश्चन लेवल इज गुड। हाँ, वो टाइम बाउंडेशन, टाइम में उतने टाइम में करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर। तो अभी आपको मेरी एडवाइस है, गो विद मेरिट बेस्ड क्वेश्चन ऑन मॉक टेस्ट एंड ट्राई टू गो विद 25 क्वेश्चन। ये अब नहीं होना चाहिए आप हर बार बोलो कि सर इफ आई गॉट सम टाइम आई कैन सॉल्व मोर देन 8 और 10 क्वेश्चन मोर। आपको आगे ध्यान रखना है कि यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 25 क्वेश्चन इन एवरी टेस्ट। सो गो विद मेरिट। मे बी पॉसिबल लास्ट के 10 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन इजी मिल जाए। और मैंने नोटिस किया है कैट में भी कहीं भी शुरू में क्वेश्चन टफ होते हैं। ये होता है 90% केसेस में होता है कि शुरू में क्वेश्चन टफ होते हैं, बच्चा उन्हीं हो जाता है आगे उसका, और डिमोटिवेट बहुत हो जाता है बच्चा उससे। If from first 5 question you are not able to solve 2 arithmetic question, आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे और वो आगे इफेक्ट करेगा। तो स्टार्ट विद मेरिट, एंड देन सेकंड एडवाइस, डेली LRDI 1 or 2 सेट डेली, राइट? एंड क्वांट आल्सो डेली, ठीक है ना? उससे क्या होगा, जैसे ब्रेक हो जाता है, जैसे आप क्वांट कर रहे हो कोई क्वेश्चन, तो आप ब्रेक करके LRDI कर दो, राइट? एनी अदर क्वेरी? यस सर। सो आपको मेरा ज्योमेट्री कोर्स देखना है, ये 2 एडवाइस पे काम करना है, एंड पॉसिबल टॉप द चैंपियनशिप टेस्ट अगेन, एंड वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस कितना इंप्रूवमेंट आया आप में। ओके सर। ओके, और मेरी 250 वाली क्लास देखो। आज मेरी एक और क्लास है सक्सेस मंत्रा, इफ पॉसिबल वॉच इट लाइव। एंड देन माय नेक्स्ट 250 इंपॉर्टेंट क्लास है 21st को, राइट? इफ पॉसिबल देन 21st को, if possible watch it live. So all the best, hope you will get more than 99 percentile in CAT. Thank you sir. Okay. Thank you.